Hello dear students, welcome on my channel. Today exponent or indices chapter. So most important questions from chapter number 8 which are known as chapter test. See question first. If 2 raised to x into 3 raised to y into 5 raised to z equal to 2160, find the values of x, y and z. Also find the value of 3 raised to x into 2 raised to minus y into 5 raised to minus z. See the solution for this question. Since 2 raised to x into 3 raised to y into 5 raised to z equal to 2160. We see that in the left hand side there are three prime factors 2, 3 and 5 and their indices are different, that is x, y and z respectively. So as far as possible we should factorize 2160 in terms of 2, 3 and 5. Now see its factors. 2160 we write here and divide it by 2, so we get here 1080. Again divide by 2, we get 540. Again divide by 2, 270. Again divide by 2, 135. Again divide by 3, 45. Again divide by 3, 15. Again divide by 3, 5. Now finally it divides by 5, that is 1. So you can say its factors are 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5. So we see that here 4 times 2, 3 times 3 and 1 time 5. So they can be written as 2 raised to x into 3 raised to y into 5 raised to z equals 2 raised to 4 into 3 raised to 3 into 5 raised to 1. Now, according to indices rule, we should compare on both sides. So 2 raised to x equal to 2 raised to 4. This implies that x equals 4. So we write here x equal to 4. 3 raised to y equals 3 cube. Therefore y equal to 3. And 5 raised to z equal to 5 raised to 1. This implies that z equal to 1. So we see that the values of x, y, z are 4, 3 and 1 respectively. और ये values आए कहाँ से? ये आ गए values सभी from the factors of, or you can say from the prime factors of 2160. So they are the prime factors here 2 raised to 4, 3 cube and 5. So we should write here 2 raised to 4, 3 cube and 5 raised to 1 and compare on both sides. We get values of x, y, z are x equal to 4, y 3 and z equal to 1. तो इस तरह से ये सभी वैल्यूज में मिल गए. अब हमें क्या करना है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड. इट इज कंप्लीटेड. हियर x is 4, y 3 and z is 1. Now we have to find the value of 3 raised to x into 2 raised to minus y into 5 raised to minus z. So we write here 3 raised to x into 2 raised to minus y into 5 raised to minus z equals 3 raised to 4, this is value of x, 2 raised to minus 3, this is value of y, and 5 raised to minus 1, this is value of z. Now expand each term. 3 raised to 4 becomes 3 into 3 into 3 into 3 4 times and this will be 81. 2 raised to minus 3, तो यहाँ पर 2 raised to minus 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 upon 2 cube. तो 1 upon 2 cube that is 1 by 8. 5 raised to minus 1 becomes 1 upon 5. Now 81 into 1 into 1 becomes 81 upon 8 into 5 becomes 40. So 81 upon 40, divide it and write in the mixed fraction. So this will be 2 is to 1 upon 40. Therefore, the value of 3 raised to x minus into 2 raised to minus y into 5 raised to minus z equals 2 is to 1 upon 40, or you can say 2 and 1 upon 40. Now see question number 2. तो सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है यहाँ पर? इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ.
So we have some expressions. We need to find that values. X equal to 2, y equal to minus 3 given. To find the value of x raised to x plus y raised to y. तो चलो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल वे से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हैं चैप्टर टेस्ट के लिए, और चैप्टर टेस्ट का मतलब है कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट. Here x raised to x, this means 2 square, 2 raised to 2, because both the values are 2, plus value of y is minus 3, so we should write here y raised to y, that is minus 3 whole raised to minus 3. So 2 square becomes 4, but minus 3 raised to minus 3 becomes 1 upon minus 3 whole cube. So 1 upon minus 3 whole cube is 1 upon 27, and here plus into minus becomes minus, because minus 3 whole cube becomes minus 27. Here in the middle it is plus, so plus into minus becomes minus, or plus upon minus becomes minus. Now 27 into 4, here it is 108. 108 minus 1 upon 27, this gives 107 upon 27. Now divide it by 27, so we get 3 is to 26 upon 27. ये रहा इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और ये है इसका आंसर सिंपल फ्रैक्शन में. तो किसी भी टाइप से आंसर को लिख सकते हो. अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है तो दोनों में से कोई एक आंसर वहां पर होगा, और स्कूल एग्जाम के लिए या और अदर एग्जाम के लिए जैसा भी वहां पर रिक्वायर्ड है वो आंसर वहां दे सकते हो. नाउ इट्स सेकंड पार्ट. Find the value of x raised to y plus y raised to x. So it is equal to, value of x is 2, 2 raised to minus 3 plus minus 3 raised to 2. So 2 raised to minus 3, that is 1 upon 2 whole cube, becomes 1 upon 8, and minus 3 whole square becomes plus 9. So it can be written as 8 into 9 plus 1, that is 73 upon 8, and it can be written as in mixed fraction 9 is to 1 upon 8. Question number third. If p equal to x raised to m plus n into y raised to l, q equal to x raised to n plus l into y raised to m, and r equal to x raised to l plus m into y raised to n. Prove that p raised to m minus n into q raised to n minus l into r raised to l minus m equal to 1. Now see its proof. Since p equals x raised to m plus n into y raised to l, it is given. Now taking power m minus n on both sides, therefore p raised to m minus n equals x raised to m plus n into y raised to l whole raised to m minus n. Therefore taking power m minus n on both sides, we get p raised to m minus n equal to x raised to m plus n into y raised to l whole raised to m minus n. Now according to indices rule or exponent rule, we expand it. So after expansion, we get here x raised to m plus n into m minus n. So power into power only becomes x raised to m square minus n square. And here y raised to l into m minus n, that is l into m minus n, becomes y raised to l into m minus n. सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स टू इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना. देखो m प्लस एन इंटू एम माइनस एन बिकम्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इट इज पावर ऑफ x, एंड l इंटू एम माइनस एन, दैट इज सेम l इंटू एम माइनस एन, इट इज पावर ऑफ y. So p raised to m minus n equal x raised to m square minus n square into y raised to l into m minus n. Let it be equation first. Similarly, q equals what? Q equals x raised to n plus l into y raised to m. So taking power n minus l on both sides, therefore q raised to n minus l equals x raised to n plus l into y raised to m whole raised to n minus l. Now index into index, so x raised to n square minus l square into y raised to m into n minus l. It is equation number 2, and this is the value of q raised to n minus l. Since r equal to x raised to l plus m into y raised to n, so taking power l minus m on both sides, we get r raised to l minus m equals x raised to l plus m into y raised to n whole raised to l minus m. Now index into index, so x raised to l square minus m square into
y raised to n into L minus m, that is y in raised to n into L minus m, and let it be equation number third. So we have three equations, equation number 1, 2 and 3, and we need to find or we prove that p raised to m minus n into q raised to n minus l into r raised to l minus m equal to 1. So we should take here multiplication of all these three equations to the left hand side and right hand sides. So from 1, 2 and 3 we get p raised to m minus n into q raised to n minus l into r raised to l minus m equals x raised to m square minus n square into y raised to l into m minus n into x raised to n square minus l square into y raised to m into n minus l. This is from equation number 2. और ये टर्म जो आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अभी थर्ड इक्वेशन रिमेनिंग है यहाँ पर, तो इसका इनटू x raised to L square minus m square into y raised to n into L minus m. This is from equation number third. So multiplying corresponding sides of equation number 1, 2 and 3, we get this. Now collecting all powers of x. On the right hand side, it is x raised to m square minus n square plus n square minus l square plus l square minus m square. Now collecting all powers of y. So y raised to it is lm minus ln plus mn minus lm प्लस nl माइनस mn. ये सभी पावर्स हमने कलेक्ट कर लिए. ठीक है, पावर्स ऑफ x एंड पावर्स ऑफ y. और पावर्स ऑफ y कलेक्ट करने के टाइम इन ब्रैकेट को भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, ब्रैकेट को ओपन कर दिया. नाउ वी सी दैट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बिकम 0, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 0, माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 0. मीन्स ये सभी पावर्स इसके कट हो गए. तो वी गेट x रेज टू 0. सिमिलरली फॉर द पावर ऑफ y वी सी दैट lm and here it is minus lm minus ln and here plus ln, here it is plus mn, it is minus mn. So power of y also 0. So x raised to 0 into y raised to 0 becomes 1 into 1 equal to 1. Hence you can say p raised to m minus n into q raised to n minus l into r raised to l minus m equals 1. Therefore LHS equal to RHS, hence proved. Now question number 4. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है. इफ x इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, y इक्वल टू a टू द पावर n प्लस l एंड z इक्वल टू a टू द पावर l प्लस m, प्रूव दैट x रेज टू m इंटू y रेज टू n इंटू z रेज टू l इक्वल x रेज टू n y रेज टू l इंटू z रेज टू m. ये हमें प्रूफ करके लाना है. तो चलो इसमें क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं. तो LHS इक्वल टू x रेज टू m इंटू y रेज टू n इंटू z रेज टू l. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. व्हाट इज x? a रेज टू m प्लस n. तो a रेज टू m प्लस n होल रेज टू m बिकॉज ऑफ दिस इंटू y रेज टू n. तो वैल्यू ऑफ y इज a रेज टू n प्लस l. हियर a रेज टू n प्लस l होल रेज टू n इंटू z रेज टू m, that is a raised to l plus m whole raised to l. So it is equal to a raised to m plus n into m square plus mn plus n plus l into n, that is n square plus nl plus l plus m into l, that is l square plus lm. So we see that power of a is m square plus mn plus n square plus nl plus l square plus ln. So left hand side we get here a raised to this much and let it be equation number first. Now taking RHS. तो right hand side में क्या दिया हुआ है वो देख लो. x raised to n, y raised to l and z raised to m. So substituting the values of x, y, z also here we get a to the power m plus n whole raised to n into a to the power n plus l, this is value of y whole raised to l, and value of z a raised to l plus m whole raised to m. Now index into index in each, we get a to the power mn plus n square plus ln plus l square plus lm plus m square, equation number 2. Now we see that in the right hand side of equation number 1 and 2 are equal. You can compare its power. A raised to mn, here it is also a raised to mn
plus m square plus m square plus n square here plus n square here plus nl plus ln plus lm एंड प्लस lm। तो इस तरह से इनको रीअरेंज करके सेम टू सेम भी लिख सकते हो या ऐसा कंपेयर कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th। So that p plus 1 upon q whole raised to m into p minus 1 upon q whole raised to n entire upon q plus 1 upon p whole raised to m into q minus 1 upon p whole raised to n equal to p upon q whole raised to m plus n। क्या प्रूफ करना है? एक बार वापस से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, देख सकते हो। p plus 1 upon q whole raised to m multiplied by p minus 1 upon q whole raised to n upon q plus 1 upon p whole raised to m multiplied by q minus 1 upon p whole raised to n equal to p upon q whole raised to m plus n। तो चलो इसका प्रूफ देख ही लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या है और कैसे प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यूज करना पड़ेगा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, it is LHS equal to p plus 1 upon q whole raised to m into p minus 1 upon q whole raised to n upon q plus 1 upon p whole raised to m, देख सकते हो यहाँ पर, multiplied by q minus 1 upon p whole raised to n। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर p इंटू क्यू, पी क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू और यहाँ पी क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू, ऐसा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लेते हैं। तो पी क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू होल रेज टू एम आया, राइट। तो पी क्यू प्लस 1 होल रेज टू एम अपॉन क्यू रेज टू एम, क्योंकि ये जो पावर है इट इज फॉर न्यूमरेटर एज वेल एज फॉर डिनोमिनेटर। तो हमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, पी क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू होल रेज टू एम। So it can be written as pq plus 1 upon q raised to m. Similarly, for the second term, pq minus 1 upon q whole raised to n. So this will be pq minus 1 whole raised to n upon q raised to n. Also in the denominator, here q into p, that is pq plus 1 whole raised to m upon p raised to m into पी क्यू माइनस 1 होल रेज टू n अपॉन पी रेज टू n। तो ये हमें 4 टर्म्स टोटल मिला करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें कितने टर्म्स मिल गए, 4 टर्म्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें सिमिलरिटी क्या है और कैसे है। तो देखो पी क्यू प्लस 1 होल रेज टू m और यहाँ पर भी है पी क्यू प्लस 1 होल रेज टू m। तो पी क्यू प्लस 1 होल रेज टू m कैंसल्ड बाई पी क्यू प्लस 1 होल रेज टू m, ये डिवाइड हो गया, न्यूमरेटर गोइंग बाई न्यूमरेटर। एंड और यहाँ पर देखो अगला पार्ट पी क्यू माइनस 1 होल रेज टू n अपॉन पी क्यू माइनस 1 होल रेज टू n, दे विल बी कैंसल्ड आल्सो। अब जो इनका डिनोमिनेटर है रिमेनिंग, तो ये हो गया 1 अपॉन क्यू रेज टू m अपॉन 1 अपॉन पी रेज टू m। तो पी रेज टू m गोज टू न्यूमरेटर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दिस विल बी पी रेज टू m अपॉन क्यू रेज टू m मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर भी देखो p रेज टू n गोज टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, q रेज टू n। तो हो गया p रेज टू n अपॉन q रेज टू n। अब इनको क्या करना है, देखो p रेज टू m इंटू p रेज टू n, इफ बेसेज आर सेम सो वी एड द पावर्स, वी एड द इंडेक्स, इट इज रूल। सो इट इज इक्वल टू p रेज टू m प्लस n। ऑल्सो इन द डिनोमिनेटर q रेज टू m multiplied by q raised to n, it is equal to q raised to m plus n. So we see that both the powers are same। देखो यहाँ पर दोनों का पावर सेम है। जैसे अभी p सपोज कर लो कि यहाँ होता है p raised to 5 अपॉन q raised to 5, तो हम उसको लिख सकते हैं p अपॉन q whole raised to 5। Similarly here it can be written as p upon q whole raised to m plus n and it is equal to RHS of the क्वेश्चन। ये यहाँ से देख सकते हो, इट इज राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन p अपॉन q होल रेज टू m प्लस n। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS यू कैन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीटेड। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कंप्लीट करते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।